अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राद। दोस्तों, आज की वीडियो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो हमने एक बांग्लादेशी सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ कंडक्ट किया और इसमें बेसिकली हमने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कवर किया। खास तौर पर इंडिया किस तरह पेनिट्रेट कर चुका है बांग्लादेश में और उस मुदाखलत या पेनिट्रेशन का सबसे बड़ा मकसद हमेशा से पाकिस्तान और चाइना को बांग्लादेश से दूर रखना था। दूसरा इसका मकसद बांग्लादेश के मिलिट्री को कभी भी मॉडर्नाइज ना होने देना था ताकि वो अपने मुल्क की हिफाजत भी ना कर सकें और हमेशा इंडिया पर डिपेंडेंट रहें। ये पूरा इंटरव्यू बेसिकली इंग्लिश में है, सो पहले जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देन पूरे का पूरा इंटरव्यू है जिसे आप फिर खुद सुन सकते हैं। हमने बेसिकली 4 क्वेश्चंस तमजिद करीम जो कि बांग्लादेश बेस्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनको भिजवाए थे एंड वी आर थैंकफुल कि उन्होंने इस पर अपना एनालिसिस दिया। इससे पहले ये पाकिस्तान स्टेट टीवी पर भी अपीयर हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इंडियन एजेंसी रॉ वो बांग्लादेशी सेक्रेटरीट और दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में इजीली इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी बहुत लंबे अरसे से, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश के सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स की प्रमोशंस, उनके तबादले वो तक न्यू दिल्ली से बैठकर तय किए जाते थे। तो इस पर बेसिकली तमजिद करीम ये बताते हैं कि जब से बांग्लादेश बना इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बेसिकली उस वक्त इंडिया के जहन में ये था कि एक सैटेलाइट स्टेट बनाई जाए, स्टेट वो एक सेपरेट हो लेकिन हमारे इशारों पर चले। और इंडिया ने तभी से अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के जो ऑफिसर्स थे उनको इंडक्ट करवाना शुरू किया बांग्लादेश में, कुछ को ओपनली कुछ को अंडरकवर। और वो क्या करते थे कि बांग्लादेश के सिविल और मिलिट्री सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, उनकी प्रोफाइलिंग होती थी, यानी बांग्लादेश का सिविल और मिलिट्री ऑफिसर है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश में तो है ही, वो इंडिया में भी होती थी ताकि फ्यूचर में उसका यूज भी किया जा सके या अगर कोई वो एंटी इंडिया कदम उठाता है तो उसको रोका जा सके। इसी तरह इंडिया ने पैरेलल मल्टीपल लोगों को अपना एसेट बनाया बांग्लादेश में जो इंडिया के लिए काम करते थे, स्टिल वो बांग्लादेशी थे। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत अहम बात की 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर कि 7 सिस्टर स्टेट्स में पिछले कई सालों से इंसर्जेंसी या मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन अब ये इंडिया का पूरा मामला एक काउंटर टेररिज्म की बजाय रजीम प्रिजर्वेशन की तरफ नजर आता है। मतलब कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उनका होल्ड 7 सिस्टर स्टेट्स पर बरकरार रहे। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि 7 सिस्टर स्टेट्स में इंडिया ने S-400 सिस्टम भी रिसेंटली डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। बांग्लादेशी साइड से भी कुछ ऐसे बयान आए कि भाई इंडिया को अगर 7 सिस्टर स्टेट से कट ऑफ कर दिया जाए तो इंडिया 2 हिस्सों में टूट जाएगा। चाइना भी 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, बिकॉज अगर 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया के हाथ से निकल जाती हैं तो चाइना के लिए बे ऑफ बंगाल का जो समुद्री एरिया है यहाँ तक पहुंचने का बहुत इजी रास्ता निकल आएगा। उसको आप मैप पर देख सकते हैं कि जहां अटलांटिक ओशन से चाइना को अपनी ट्रेड और अपने मामला किसी भी अपनी शिप को लेकर आना होता है, अगर बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये रास्ता निकल आए तो वो इजिली ग्वादर पोर्ट और उससे आगे अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज तक जा सकते हैं। इसी तरह हमने इससे पहले मुख्तलिफ डिटेल्स पर बात की हुई है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर, कि किस तरह लाल मुनीर हट के एरिया में जो कि इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, वहां एक एयरबेस बांग्लादेश तैयार कर रहा है। और ये एयरबेस तैयार कर रही हैं चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज, और बांग्लादेश अगेन इंटरेस्टेड है चाइनीज जेट एंड सी एयरक्राफ्ट में और पाकिस्तानी GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में। इसके अलावा दूसरी भी मल्टीपल डील्स हैं जिन पर इस वक्त निगोशिएशंस जारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और बांग्लादेशी कंपनीज मिलकर बंगाली टैंक्स को अपग्रेड करेंगी, उनकी ओवरहॉलिंग का काम करेंगी ताकि उनकी अवेलेबिलिटी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा नंबर बांग्लादेशी टैंक्स के ऑपरेशनल हों। क्योंकि अगर आपके पास 200 टैंक्स हैं लेकिन ऑपरेशनल 75 हैं तो 75 ही यूज कर सकते हैं, बाकी सिर्फ सिटिंग डक्स होते हैं। तो इस वक्त ये कोशिश की जा रही है बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से, जो इस वक्त लूप होल्स है जो कि ऑब्वियसली इंडिया के कंट्रोल की वजह से पैदा हुए, उनको अब खत्म किया जाए। इसमें तमजिद करीम ये भी बताते हैं कि इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स के मामलात में भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बांग्लादेशी एसेट्स को भी यूज करता आया है। अब बांग्लादेश जो एक सेपरेट कंट्री है, वहां के लोगों को अपने मकासद के लिए इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स यानी कि मणिपुर, आसाम जैसे रीजन में यूज करता रहा है स्पाई पर्पसेस के लिए या इसी तरह के दूसरे मामलात के लिए। और इंडिया इन 7 सिस्टर स्टेट्स में अपने इन बंगाली एसेट्स को इस तरह भी यूज करता रहा ताकि दुनिया को या खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना को एक मैसेज दिया जाए कि भाई ये तो हमारे साथ हैं, हम तो इन्हें अपनी इवन इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स में भी यूज कर रहे हैं, तो आप इनसे दूर रहें। तमजिद ने यहाँ बहुत ही ज्यादा एक अहम चीज कही जो मेरे नजदीक फिनोमिनल है। बात उन्होंने ये की कि मुजीबुर रहमान पर इंडिया ने कम्प्लीटली इन्वेस्ट किया। इंडिया ने बांग्लादेशी लोगों की बजाय मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को चुना
उनको हर किस्म के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। यही वजह थी कि जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट अगस्त 2024 में गई तो बांग्लादेशी लोगों ने इंडिया के खिलाफ तहरीकें निकालना शुरू की, बिकॉज वो ऑलरेडी उस प्रोसिक्यूशन का हिस्सा थे और इंडिया ने मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को एक टूल के तौर पर यूज किया ताकि वो बांग्लादेश को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकें। देन फिर तीसरे अहम पॉइंट की बात करें तो इस पर बांग्लादेशी एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि आज भी रॉ एक बहुत बड़ी तादाद में अपने एसेट्स को बांग्लादेशी मीडिया में, देन बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में रखे हुए वो एसेट आज भी इंडिया के लिए काम करते हैं। और यही वजह है कि जब उस्मान हादी जो बांग्लादेश के एक यंग पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी जब शहादत हुई तो लोगों ने इंडिया के खिलाफ रैलियां निकाली और प्रो इंडिया एक दो मीडिया हाउसेस थे जिन पर अटैक्स भी रिपोर्ट हुए और ये अटैक्स पब्लिक ने किए। सो इवन ग्राउंड लेवल पर भी पब्लिक को पता है कि इंडियन एजेंसीज बांग्लादेश में क्या कर रही हैं, वो किस तरह लोगों को टारगेट कर रही हैं और उसकी कीमत आम बांग्लादेशी लोग किस तरह पे कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बहुत अहम एक रेफरेंस दिया अबू रुश्द की बुक रॉ इन बांग्लादेश का। ये बेसिकली बंगाली हिस्टोरियन है, राइटर है, जिन्होंने ये पूरी बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने एक्सपोज किया था कि 60,000 के करीब रॉ के एक्टिव ऑपरेटिव्स बांग्लादेश में मौजूद हैं। 60,000, और ये कोई छोटा नंबर नहीं होता, और ये बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में फैलाए गए हैं। इनका काम उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के मुताबिक होता है, यानी कि अगर तो कोई मिजोरम के एरिया में तो आज जो एंटी बांग्लादेश मिलिटेंट्स हैं, फिर उसके साथ साथ म्यांमार के मामला है उनको वो देखेगा। अगर कोई शख्स ढाका में है तो वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के मामला पर नजर रखेगा, उसके बारे में इंडिया को अपडेट करेगा। इसी तरह अब लेट्स सपोज कोई लाल मुनीर हट के एरिया में इंडिया के ऑपरेटिव्स अगर मौजूद हैं, उनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उनका पहला काम है कि उस एयर बेस पर नजर रखना जो बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए बना रहा है। और चूंकि वो इंडियन बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा करीब है तो उस पर इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न्स भी हैं। इंडियन साइड पर इस तरह के बयानात भी आ चुके हैं कि वो बांग्लादेश को इस पर डेटर करेंगे। अब ये वो तमाम अहम पॉइंट्स थे जो तमजिद ने हाईलाइट किए। इसके बाद आप प्रॉपर अब इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाएं। Assalamualaikum. Thank you for having me. About your first question, what I will say that in last 15 years during the fascist regime in Bangladesh, India literally provided training to the Bangladeshi civil servants and both the civilians and military as well. So during their training, what they did actually is that they created profiles of Bangladeshi civil servants and they found out where their weaknesses are, and according to that they did everything to make them compromised and create them as Indian assets in Bangladesh. So there is no doubt that there are some elements in Bangladeshi bureaucracy who have been working for New Delhi. And when Dr. Yunus's revolutionary government, the interim government, which we say, uh, when they inherited the government in Bangladesh, they inherited them as well, and some got exposed, some have been taken into account, but we cannot really say that how many more are remaining. So that is and about the second question. As far as the Seven Sisters is concerned, India inherited this security threat right from the beginning in 1947 when East Pakistan existed, and since then they had a security concern regarding their Seven Sisters, which are the seven isolated states of India on the far northeast of their country. So in last 15 years, what happened is that indeed their focus shifted from just counterinsurgency and counterterrorism in that region to uh, regime preservation tactics, because it was the Army League through whom they found out that their Seven Sisters can remain most safely, and the Indian military and political establishment also found out that they have their most reliable asset, which is Army League, and it is no doubt that they have been their asset for a very long time. If I go into history, if in last 50 years, from the time of Sheikh Mujibur Rahman, they they were India's most trusted ally in Bangladesh. So there is no doubt that they will try to go for a regime preservation tactics, and that is exactly they did.
The entire India-Bangladesh relation, as far as concerned, they actually never focused on creating people-to-people bond between the two countries. They put all their eggs in one basket, and that was Awami League. So no, never had any other alternative in Bangladesh. They never created any. Whether they will try to create any such alternative in Bangladesh, that is an interesting point to see. And with the upcoming election in Bangladesh, we will have to wait and see which side India supports. That is a political reality in Bangladesh, and currently the situation which is here, no one will, at least common people, will not go for India. They have seen in the Indian friendship in last 50 years what they did, how they treated Bangladesh as their subservient nation, and from their security perspective only. So yes, of course, they have been on a tactics of regime preservation, and Awami League is still their most trusted ally in Bangladesh. There is no doubt about that. In last 15 years, India invested a great deal in Bangladeshi media. Not only do they have their own propaganda machine who day and night like screams against anti-Pakistani rhetoric, but they what they did here is that they created their own soft assets inside Bangladesh, and especially within Bangladesh's media and cultural sector. Uh, to be honest, if I can give a few examples, recently, uh, after the martyrdom of Usman Hadi, people, angry, I will say, angry people burned down two newspaper offices, and those two were most notable uh, daily newspapers in Bangladesh who have been work in favor of India and in favor of spreading Indian narrative and the regime's narrative in Bangladesh's society. So yeah, this is indeed true that they have invested a great deal in Bangladesh's media, print media, electronic media. Uh, there is no doubt in this as well. And not only that, they have carried out a formula of showing that if the Army League regime does not remain in power, then there will be Islamist uprising in Bangladesh, and it will become a hub of terrorism in the world, and that is what they have sold to the West exactly. In 2008, when the army regime came in Bangladesh through a forged election. They gained the American support, especially through against war on terrorism and against Islamist extremism. The policy which America had taken as its global policy in throughout the world. So yeah, America continued to sell that narrative to the world, and this gained support. They kept on gaining support for on their behalf, and this is exact mechanism and exact weapon, I will say, a weapon that they used to crush the opposition parties in Bangladesh, which are the BNP and Jamaat Islami. Uh, they forced disappeared thousands of people in Bangladesh with by playing this terror card, and India directly supported this terror card. Indian backed media, Indian backed electronic and print media, they actively, uh, directly and indirectly, uh, tagged them as terrorists. And even now they're doing the same thing, very much doing the same thing. But people on the other side, they understand this and they don't buy these things. So they are angry, and they had to um, put their anger out somewhere after Usman Hadi's death. Usman Hadi's death has like literally changed the political course of Bangladesh, and now it has become a decisive factor that whether there will be Indian hegemony in Bangladesh or not. So this is, I will say, the case for supporting
Indian support on media and the cultural sector of Bangladesh. This book that is raw in Bangladesh is concerned, the number of raw operatives he have provided in his book is staggering. It outgrows an entire army corps, if you say. So I will say that Raw operates on different level in Bangladesh, and they follow different tactics. Their most prominent tactics have been honey trapping politicians and bureaucrats. Some go falls for the money, some falls for women, some for greater positions of power in Bangladesh, and they, as I said earlier, that people they have trained in their country, especially the civil servants and the military officers, they have profiled them and they know their weaknesses. So they play by those weaknesses, and that has been a prominent tactics of raw operating in Bangladesh. And secondly, the money has always been a core concern, I will say, because the corrupt officials and the corrupt politicians, if you provide them money, you can do anything. So, indeed, the I will not go for the number, but the influence of Raw has been in every sector of Bangladesh, as I have said earlier. And although it might not be 60,000, but even if it's 6,000, it is a lot, I will say. Thank you.